Hello students. In this video, I am covering spontaneous process. And as you can see on the screen, spontaneous process I will be linking to delta G, that is change in Gibbs energy. Then I will link it to delta H, change in enthalpy. Further, its connection with delta S, the change in entropy, with a little emphasis on driving force, and E cell, that is EMF of the cell, which EMF of cell we have already done in electrochemistry also. And again, we will see it here. Before we begin with the actual interlink, the interpretation or the connection between these various thermodynamic quantities like Gibbs energy or enthalpy or entropy, let us first understand, let us first just see, let us revise spontaneous process and non-spontaneous process क्या है. पहले वो समझते हैं कि ये टर्म से हमारा इशारा किस बात की तरफ है. When we say spontaneous process and when we say non-spontaneous process, what we actually mean, let us see that. जैसा आप सब जानते हैं, एक जनरल लेमैन्स लैंग्वेज में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो जो खुद होता है एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो जो खुद से नहीं हो सकता. That is, the general terminology is a spontaneous process is that process which can take place on its own, while a non-spontaneous process cannot take place on its own. The general way of analyzing the term. But thermodynamically, it is not so. But there is something more to it. यानी कि thermodynamically, जब हमें डिफाइन करना है, समझना है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, तो सिर्फ सेल्फ होता है या वो सेल्फ नहीं होता है, that is not the only way, but there is something more to it. और वो कुछ और क्या है? See here, spontaneous process, you know, can take place on its own. ये सबको पता है. Can take place on its own, but thermodynamically, even जो process initiation से हो जाए, वो भी spontaneous है. यानी कि spontaneous process is that process which can take place on its own, that is by itself or by initiation. Nothing to do with whether it is fast or slow. There is a misunderstanding. Students feel that a process which is taking place very fast is spontaneous. That is wrong, my dear students. Spontaneity has got to do nothing with the speed or the rate. That is why I am mentioning here, it is independent of the rate. Don't mix rate or speed with spontaneity. It is independent of rate. So, any process which can take place by itself or has an urge to take place or can take place by initiation and is nothing to do with the rate, independent of the rate of the process, that is the process which is feasible, is a spontaneous process. And एक बात ध्यान रखना है, all these terms will be applicable under some given conditions.
under some given conditions, which can be of temperature or pressure. Now a non-spontaneous process. Non-spontaneous process में हम क्या लिखेंगे? जो खुद नहीं हो सकता, cannot take place on its own and nor by initiation. That is a process which is not having any tendency to take place. Again, non-spontaneous doesn't mean slow. एक बहुत खास बात याद रखना, non-spontaneous doesn't mean slow. Now let us look at some examples जो कि ये spontaneous और non-spontaneous जो हम सीख रहे हैं उसको बहुत ही क्लियर कर देगा. See, जैसे dissolution of NaCl. मैंने NaCl लिया, सॉल्ट लिया और मैंने इसे पानी में डिसॉल्व कर दिया. दिस इज स्पॉन्टेनियस, ये खुद डिसॉल्व होगा. सिमिलरली फ्लो ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल will be spontaneous. Similarly, flow of heat from a hot end to a cold end, from a hot body to a cold body. Then we can say acid-base neutralization. So neutralization is a spontaneous process. Acid-base neutralization, acid and base react with each other spontaneously to give us salt and water. Similarly, evaporation of water in an open vessel. मानो आपने एक ओपन वेसल में पानी रख दिया तो भी वो इवेपोरेट होगा ना. आप वहां बैठ के उसे हीट थोड़ी कर रहे हैं, आपने उसे गैस पे थोड़ी रखा है. So evaporation of water from an open vessel is also spontaneous. Then और क्या एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं? जैसे कंसिडर अ बल्ब फिल्ड विद अ गैस. ये ऐसा मैंने लिया, ये दिस इज अ बल्ब and this is filled with a gas. Okay, and यहां पर ये बल्ब में मैंने गैस फिल कर दिया. ठीक है, ये गैस फिल्ड है इसमें. दिस इज द बल्ब फिल्ड विद द गैस. ये इसके अंदर गैस है पूरा. ओके, दिस इज द गैस. और इस बल्ब को मैंने एक दूसरे इवैक्यूएटेड यानी खाली बल्ब के साथ यहां कनेक्ट कर दिया और ये एक स्टॉप कॉक लगा दिया इसमें मैंने. और ये एक साइड इसमें देखो गैस फिल कर दिया और एक साइड इसको मैंने खाली बल्ब से कनेक्ट कर दिया. सो व्हाट आई एम कंसिडरिंग राइट नाउ इज अ bulb filled with a gas. This bulb filled with a gas and it is connected to an evacuated bulb, this one, that is which is empty with and connected by a stopcock. As soon as I open the stopcock, the gas expands and spontaneously occupies entire space. यानी कि जैसे ही आपने ये stopcock खोल दिया, इसको ओपन कर दिया, ये stopcock मैंने इसे ओपन कर दिया. जैसे ही ओपन किया, ये जो इसके अंदर गैस था
ये पूरे यहाँ के बल्ब से निकल के यहाँ पे भी फैल जाएगा और यहाँ पे भी होगा. It will acquire entire space. Such a process is also spontaneous process. Now let us see some examples of non-spontaneous process. बिल्कुल इसके opposite में कुछ लिखेंगे. जैसे dissolution of sand in water. Now, how can sand dissolve in water? So obviously this is non-spontaneous. Dissolution of sand in water. Now, flow of water. Somebody says, okay, water flows spontaneously, but then it cannot happen from lower level to higher level spontaneous. That is, water cannot spontaneously rise above the mountain and go from bottom of the mountain to the top without any help. Even with the help, if I initiate, then till the external factor is applied, it will happen and then it will stop. Or flow of heat from cold body to hot body. How can that be spontaneous? That is not spontaneous. Or diffusion of a gas. Diffusion of gas from low pressure to high pressure, not possible. Similarly, a cup of, suppose I take a cup of I'm taking a cup of cold coffee. This will not become hot on its own by keeping it at room temperature, can it? No. So these all are non-spontaneous processes. I hope this is clear, students. If you're writing this, you can pause and you can take down. And if you want, you can also take the screenshot and you can, see it later on. Since this is a live class going on, if anyone has any doubt, can also ask me. What are the doubts you are having? Okay. If nothing, then we can proceed further. I'm also just labeling the process. In last video, we did till point number 39. So let us take it as point number 40. Okay. Now I'm proceeding further. That is point number 41. And the point number 41 is something very, very important, which talks about cause of spontaneity. Very important factor. I should know why something is spontaneous or non-spontaneous. The cause of spontaneity. Children, the force which keeps process spontaneous, or the force which is responsible for spontaneity of a process, यानी वो फोर्स जिसकी वजह से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहता है, उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स. उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स. तो क्या क्या समझा हमें ये समझा ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स होता है जो कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस रखने के पीछे का कारण है. यानी force which is responsible for spontaneity of process is called the driving force. और ड्राइविंग फोर्स के लिए हम एक सिंबल रख लेते हैं D. आगे कभी भी हमने D लिखा तो वो ड्राइविंग फोर्स है. अब
किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसे एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, जो कि होती है टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है वो अनस्टेबल है, और हर अनस्टेबल चीज स्पॉन्टेनियसली एक ऐसी दिशा में जाने की कोशिश करती है जहां वो स्टेबल हो जाए, यानी कि उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाए। सो टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। Okay, more the stability, less the energy, and hence every system tends to acquire minimum energy. Example, say I take a stone. I take a stone. This is a stone. I take a stone which is lying at a height. Now this stone has a tendency to fall down so as to have minimum potential energy, यानी टेंडेंसी टू फॉल डाउन इज वेरी स्पॉन्टेनियस फॉर द स्टोन। जैसे और एक एग्जांपल हम देखते हैं, हमने बहुत बार देखा है, वाटर फ्लोज डाउन द हिल। कोई उसको थोड़ी वहां धक्का मार रहा है वाटर को, इट फ्लोज डाउन द हिल टू हैव मिनिमम एनर्जी। A watch, a wound watch spring has a tendency to unwind. एक spring जो पूरा winded है, it has a tendency to unwind on its own to occupy minimum energy condition. तो ये सब एक्चुअली क्यों हो रहा है? फॉर टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी। हमने 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट से कोल्ड पे जाता है, सीधी बात है, टूवर्ड्स मिनिमम एनर्जी, यानी टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। हेंस इस बात से एक चीज एकदम क्लियर हो गई कि सभी प्रोसेसेस तभी स्पॉन्टेनियस होते हैं व्हेन दे टेंड टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। अब एक बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब जो एग्जाम्पल बोले हमने, ये तो बहुत हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी एग्जाम्पल पढ़े। अब एक कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सपोज मैंने एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिया, ठीक है, ओके। नाउ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हिच आई एम टेकिंग इज, जस्ट लुक हियर, H2 which is gaseous plus half O2 gaseous becomes H2O liquid। और ये जो रिएक्शन है, इसमें डेल्टा H रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज 285.8 किलोजूल per mole evolved। अब ये, this is an exothermic process. This is accompanied by evolution of heat, and hence they are accompanied by decrease of energy. Hence they have negative value for the enthalpy change, you can see. Thus exothermic reactions are spontaneous. So I'm just adding here. Exothermic reactions are spontaneous. Okay. अब immediately हम जाते हैं above criteria of minimum energy जो है, ये फेल कहाँ होता है? So above criteria of minimum energy, above criteria of minimum energy fails for, yes, endothermic reaction। कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा है, डिस्कस कर रहे हैं, एंड में पता चलेगा इनमें से क्या क्या सही में उठाना है। फेल्स फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस लाइक water, liquid, and I want to evaporate it to make it water vapor. Now the change in enthalpy of vaporization under standard conditions is 40.8 kilojoule per mole absorbed. Obviously this reaction is endothermic. Unless and until I don't supply 40.8 kilojoule,
evaporation cannot take place, and hence such a process which requires this extra energy to be supplied shall be what? Non-spontaneous. So evaporation of water जो है वो obviously non-spontaneous होना चाहिए. Correct? तो ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आ गया, और ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक ये स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आ गया, बिकॉज यहाँ एनर्जी इवॉल्व हो रहा है और यहाँ एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नली, जो कि डिसाइड कर रहा है दिस कैन इवॉल्व एनर्जी एंड हैपन ऑन इट्स ओन, कैन कंटिन्यू फर्दर, and this cannot happen on its own and will be non-spontaneous. Now, what is the other criteria of spontaneity? After energy criteria, the other criteria for spontaneity is tendency for maximum randomness. Meaning maximum entropy. We have learned randomness is entropy. The disorder of the system or the randomness of the system is nothing but the entropy of the system. तो कोई भी प्रोसेस जो spontaneous है वो maximum randomness achieve करने की कोशिश करता है. Say for example, ice, solid, melts on its own. It becomes liquid. Water, it melts on its own. At room temperature also it melts. Because यहाँ जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो लेस रैंडम है, आइस के पार्टिकल्स लेस रैंडम है, वाटर पार्टिकल एकदम कॉम्पैक्ट है, और इधर डिस्टेंस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो ये मोर रैंडम है. यानी कोई ऐसा प्रोसेस जो लेस रैंडम से मोर रैंडम की तरफ जाता है वो स्पॉन्टेनियसली खुद हो सकता है. सिमिलरली कुछ और एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? हाँ करेक्ट, पहले हमने किया वाटर इवेपोरेट्स स्पॉन्टेनियसली इवन एट रूम टेम्परेचर, बराबर है, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस है और वो एग्जांपल हम पहले ले चुके हैं, सो वी विल नॉट कंसीडर सेम एग्जांपल अगेन. वी कैन कंसीडर समथिंग एल्स, से अमोनियम क्लोराइड. ओके, अमोनियम क्लोराइड को मैंने ये पानी में डाल दिया मैंने इसे, ठीक है. अब जब मैंने अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया तो अमोनियम क्लोराइड becomes NH4 plus Cl minus. अब ये तो फ्री टू मूव नहीं है, they don't move freely, no movement freely, बट आयंस का तो फ्री मूवमेंट है. So when NH4Cl is dissolved in water, it becomes ammonium ion and chloride ion which are free to move. So this is less random, and these ions which are free to move is more random. So the process is spontaneous because it is moving towards maximum randomness condition. हम ऐसा भी assume कर सकते हैं, ये एंट्रोपी आइस का S1 है और लिक्विड वाटर का S2 है. When S2 is greater than S1, process is spontaneous. Same way NH4Cl entropy is S1 and NH4 plus and Cl minus is S2, and when S2 is greater than S1, the process is spontaneous. That is
delta S positive is a criteria of spontaneity. Delta S positive is a criteria of spontaneity. And we go to the previous page. This delta H negative is also the criteria of spontaneity. So these are the two criteria of spontaneity, and the two criteria for spontaneity, we are saying tendency for minimum energy and tendency for maximum randomness, meaning minimum energy and maximum randomness conditions is the criteria of spontaneity. So tendency for minimum energy and tendency for maximum randomness is the criteria of spontaneity. So that is the criteria of spontaneity. We have concluded this. Now, अब इसको बहुत बढ़िया एक मतलब एग्जाम्पल लेके कंसिडर करते हैं. एक बार एग्जाम्पल समझ आ गया तो सब हो जाएगा. बहुत ध्यान देना बच्चों, बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. कंसिडर, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना. अभी कंसिडर द फॉलोइंग process. This is a hypothetical process which I am considering, जिसमें कि A becomes B. Any hypothetical process, A is becoming B. अब इधर मैं assume कर रही हूं E, R and D. हर एक का मीनिंग भी आपको बता देते हैं. E is tendency for minimum energy. So E is the tendency for minimum energy. R is tendency for maximum randomness. और डी तो लिखते ही आप लोगों को याद आ गया होगा, क्योंकि हमने कहा था कि जहां भी हम डी लिखेंगे वो है या वो है ड्राइविंग फोर्स. सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स. सो ये हो गया हमारा ई, आर एंड डी. E is tendency for minimum energy, R is tendency for maximum randomness, and D is the driving force. अब देखो, there are three possibilities. 3 cases exist होंगे. See, case 1. This is a very unique way in which I am presenting the spontaneity thing. Just be very attentive. Case 1. केस 1 में मैं क्या एज्यूम कर रही हूं कि जो ड्राइविंग फोर्स है that is in forward direction. The driving force is in the forward direction. The driving force is in the forward direction. Now see, we take E. E is, this is the symbol, this arrow, this is showing exo, evolved. इधर बाहर निकल रहा है ना, एरो बाहर की तरफ है ना, यानी एक्सोथर्मिक. आर का एरो भी बाहर की तरफ है, यानी रैंडमनेस भी बढ़ रहा है.
जब ये दोनों होगा, ये एक्सोथर्मिक भी है और रैंडमनेस भी बढ़ रहा है, तब ड्राइविंग फोर्स भी फॉरवर्ड होगा, प्रोसेस को होने देगा, बिकॉज डी विल बी नथिंग बट ई प्लस आर. ऐसा फोर्स, ऐसा ऐसा प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा. देखो हमने यहां क्या किया, मैंने बोला हमें पता है डिक्रीज, जब एनर्जी डिक्रीज होगा और एंट्रोपी बढ़ेगा तो वो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है. ठीक है, इतना हमने कर लिया. देन वी अज्यूम, मान लेते हैं ई टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी है, आर टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस है और डी एक ड्राइविंग फोर्स है. अब ड्राइविंग फोर्स हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स है विच अलाउज द प्रोसेस टू अकर. So driving force is the force which allows the process to occur. अब जब सिस्टम एनर्जी छोड़ रहा है, यानी द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड इट्स रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग, देन ड्राइविंग फोर्स विल बी मच लार्ज एंड विल अलाउ द process to occur. These condition will always favor the process and will lead to a spontaneous process. Let us see how it differs. Say I take E, that is a reaction where energy is evolved, the process is exothermic, but just see the arrow for randomness, what I am doing. The randomness is decreasing. And when randomness decreases, see what happens to the driving force. The driving force, that is this and this, does not get added, but this amount is subtracted from the exothermic, and the driving force is this much. But the driving force is there, and in this situation, D is E माइनस आर. तो ये जो ई का लेंथ है, ये एक एजम्पशन है कि भाई इतना इतना एक्सोथर्मिक है और ये इतना रैंडम है, यानी रैंडमनेस घट तो रहा है लेकिन कम मात्रा से घट रहा है. तो फाइनली डी मिल रहा है, ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है, यानी ऐसी कंडीशन में भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जहां पर ई एनर्जी कंडीशन फेवर्स द प्रोसेस, but the randomness condition opposes the process. लेकिन क्योंकि E is greater than R, still driving force will favor the process and the process will be spontaneous. Okay, next condition लेते हैं. Just see next में हम क्या कर रहे हैं, कौन से क्राइटेरिया को हम ऑपोजिंग बना रहे हैं. ये देखिए ई, ठीक है, बहुत ध्यान देना. ये ई जो है एंडोथर्मिक है, इसने एनर्जी लेना शुरू किया है, ये एनर्जी लेके ही होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है. लेकिन इस प्रोसेस में मान लेते हैं रैंडमनेस बहुत ज्यादा मात्रा से बढ़ रहा है. नाउ डी इज still existing little because D is R minus E, randomness minus energy. वो एंडोथर्मिक है प्रोसेस, लेकिन रैंडमनेस उससे ज्यादा है, यानी यहां पर E प्रोसेस को ऑपोज कर रहा है, ऑपोजेस, लेकिन R उसको फेवर कर रहा है. एंड क्योंकि रैंडमनेस एनर्जी से बड़ा है, इसलिए ड्राइविंग फोर्स टोटल उसे फेवर कर रहा है, एंड सच अ प्रोसेस इज आल्सो स्पॉन्टेनियस. यानी टू कंक्लूड, टू जॉट डाउन, टू जीरो डाउन, क्या नतीजा निकला? अ प्रोसेस विच इज एक्सोथर्मिक and shows increase in randomness is always spontaneous, no doubt about it.
लेकिन एक ऐसा प्रोसेस जहां मान लीजिए एनर्जी तो प्रोसेस को फेवर कर रहा है लेकिन रैंडमनेस फेवर नहीं कर रहा, तो भी प्रोसेस फेवर हो जाएगा, यानी तो भी ड्राइविंग फोर्स प्रोसेस को फेवर करेगा अगर एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा है रैंडमनेस के डिक्रीज होने के कंपैरिजन में। सिमिलरली एक ऐसा प्रोसेस जो एंडोथर्मिक है, यानी एनर्जी कंडीशन के हिसाब से वो प्रोसेस ऑपोज हो रहा है, लेकिन रैंडमनेस इतना ज्यादा बढ़ रहा है उस प्रोसेस में कि रैंडमनेस डोमिनेट्स ओवर एनर्जी कंडीशन, और ऐसी सिचुएशन में भी द ड्राइविंग फोर्स विल फेवर द प्रोसेस एंड सच अ प्रोसेस विल आल्सो बी spontaneous. Hence we can conclude something very 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 interesting and mind blowing, और वो नतीजा ये निकला बच्चों कि प्रोसेस चाहे एक्सो हो और एंडो हो वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अदर कंडीशन ऑफ रैंडमनेस. Now we move to case 2. Let us see what it is. So in point number 42, case 2. Case 2 says, when the net driving force when the net driving force is in backward direction, not forward. पहले वाले में हमने forward लिया था, सब arrows pointing forward थे, इधर driving force is in backward direction, then what happens? That is what we have to find. Okay. Again, the first energy condition, say the process is endo, yani energy opposes the process. Oh my god, the randomness is also backward because yahan humne fix kar diya randomness backwards, so that is fixed. Now we know D is still bigger but in backward direction because D is E plus R, and both, that is E opposes the process, R opposes the process. So obviously such a process is non-spontaneous, no doubt about it. Next, suppose energy condition is exothermic, randomness is opposing by a larger amount, then the net driving force will be opposing because D will be E minus R. बराबर है ना? ये देखिए, ये इतना फेवर कर रहा है और ये इतना अपोज कर रहा है, तो ये इतना इतना कट हो गया और बच गया ये वाला पार्ट इतना जो कि फेवर नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ये इस बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया, यानी E favors, but E favors the process but R opposes the process, and R opposition is much larger than E favorism, and hence the process is non-spontaneous. This is a very wonderful pictorial way of explanation. You will understand it. Now E is, I'm taking endo, okay? E is endo by this much amount. This line is simply the range of endothermic. R is, randomness is increasing. You can see it is in the forward direction, meaning increasing. But this is opposing. Now see, this much gets cancelled. This much gets cancelled. So still
driving is still in the backward direction because the backward area is still more. So driving force is in backward direction. And we know over here, D is, driving force is R minus E. So, बच्चा लोग, E opposes, although R favors, energy opposes the process, randomness favors the process, but the opposing nature of energy is so high than randomness that the process is still non-spontaneous. And the last case is case 3. Let us see what it is. Case 3 in the energy and the randomness criteria. Something very simple, and here what I am taking is driving forces zero. याद रखना हम कहां से कहां तक आ गए. पहले केस में ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड था, यानी हमेशा उसे फेवर में रख के हमने पता लगाया तीनों कैटेगरी स्पॉन्टेनियस का. सेकंड केस में ड्राइविंग फोर्स हमेशा बैकवर्ड था, तब हमने 3 कैटेगरी पता लगाया, तीनों नॉन स्पॉन्टेनियस था. और अब तो ड्राइविंग फोर्स 0 है, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन में आ गए हैं जहां पर 2 ही कंडीशन होंगे. मान लेते हैं एनर्जी फेवर्स द प्रोसेस, यानी एक्सो. randomness opposes the process by an exactly equal amount. You can say, you can see the arrow length exactly equal. So driving force will be 0. They will cancel each other. So E favors, R opposes, but E is equal to R. So 2 मीटर आगे बढ़े, 2 मीटर पीछे बढ़े, यानी जहां थे वहीं रह गए. So E is favoring the process, but R is opposing, and what you see is the amount by which E favors is exactly equal to the amount by which R opposes, और दोनों इक्वल है, मैंने कहा इक्वल अमाउंट. So the process will be non-spontaneous. Next category, let us take ulta pulta. E favors, exo hai. No, I have to take opposite. So let E oppose, because I have already taken favors. So E opposes the process, endo, and R favors. But see, the amount is equal. Just see the length of the arrow again. So D will be 0. Now, although E opposes and R randomness favors, तो भी क्या फायदा हुआ भी, दोनों इक्वल है ना. एक ने दिया, एक ने लिया, कहानी खत्म. E is equal to R. Since E is equal to R, children, even though E is opposing and R is favoring, तो भी क्या, एक ने अपोज किया, एक ने फेवर किया, लेकिन इक्वल अमाउंट से किया, यानी जहां थे वही है. सो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. So this is the criteria of spontaneity. अब एक पॉइंट और करेंगे हम स्पॉन्टेनिटी का आज, और यहां पर हम स्पॉन्टेनिटी को लिंक कर रहे हैं. 2 एग्जाम्पल लिखते हैं. देखिए, लेट अस टेक 2 क्या 3 ले लेंगे. लेट अस सी. Evaporation of water. Something very, very interesting.
H2O liquid becomes H2O gas, and delta H is 44 kilojoule per mole absorbed. ठीक है, अब देखो एंडोथर्मिक है, इधर ही बनाते हैं, ठीक है. एंडोथर्मिक है यानी एनर्जी ऑपोजिट्स, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है. रैंडमनेस, भाई लिक्विड से गैस हो रहा है यानी एंट्रोपी बढ़ रहा है. S1 है, ये S2 है, S1 इज लेस देन S2, एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी यानी रैंडमनेस फेवर्स. और ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है. द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. मतलब हम कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं? डेफिनेटली R is greater than E. That is why it is spontaneous. Let us see some other example. एक और example देखते हैं where if E is greater than R. See, H2 gas plus half O2, ठीक है. ये भी मैंने of course gaseous है ऑक्सीजन, और ये मुझे मिल गया H2O लिक्विड. ओके, अब इसका डेल्टा H है 286.2 kilojoule per mole released. Now E energy is exothermic है, फेवर करेगा, वेरी क्लियर, सबको मालूम होगा फेवर्स. रैंडमनेस, ये गैशियस है और ये लिक्विड है यानी S1 is greater than S2 यानी रैंडमनेस इज ऑपोजिंग द प्रोसेस. बट नेट रिजल्ट है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. ये एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस है, मतलब हमारा कंक्लूजन निकल गया E must be much higher than R. That is why the process is spontaneous. तो यहां पे हमारे दो फैक्टर हो गए. अगर डेल्टा H एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर डेल्टा S पॉजिटिव है तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. खाली ये देखना होता है रैंडमनेस बढ़ा है या एनर्जी का फैक्टर बढ़ा है. अगर कोई प्रोसेस, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कोई प्रोसेस में रैंडमनेस डिक्रीज होता है यानी एंट्रोपी कम हो रहा है और फिर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है और बहुत ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हुआ है, एंड एनर्जी इज विच इज इवॉल्व्ड वो बहुत ज्यादा है देन द डिक्रीज ऑफ रैंडमनेस, ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसे बोलेंगे एंथैल्पी ड्रिवन. यानी उसके ड्राइविंग फोर्स को बहुत मजबूत बनाया उसके चेंज इन एंथैल्पी ने, जो कि एक्सोथर्मिक है. और यही दूसरी कंडीशन में अगर प्रोसेस का एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है यानी दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ऑपोज कर रहा है, एनर्जी फैक्टर इज ऑपोजिंग द प्रोसेस, लेकिन फिर भी आपको दिखता है कि ये प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, मतलब उसका रैंडमनेस इतना ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा होगा दैट रैंडमनेस एक्सीड्स, डोमिनेट्स द एनर्जी एंडोथर्मिक फैक्टर, और ऐसा प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस होगा और उसको बोलेंगे एंट्रोपी ड्रिवन. यानी the process is made spontaneous because the driving force is much more in forward direction, because entropy increases by a large amount which overcomes, which precedes, which actually
dominates over the endothermic nature of the reaction. अब हम सबको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मालूम है. उस इक्वेशन के अंदर हम 4 फैक्टर पढ़ लेते हैं स्पॉन्टेनिटी के. दैट इज अवर पॉइंट नंबर 44. आई एम एज्यूमिंग आपको ये इक्वेशन आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इस इक्वेशन को हम स्पॉन्टेनिटी से लिंक करते हैं. और यहाँ हमारे 4 डिफरेंट केसेस बनेंगे. केस 1, केस 2, case 3, all we will see at a stroke on the same page, which will give you a very good understanding. Let us see. Delta G is equal to delta H minus T delta S. यहाँ पे हम अपने रेफरेंस के लिए लिख देते हैं कुछ चीजें. डेल्टा G नेगेटिव और डेल्टा H नेगेटिव and a delta S positive and a EMF जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट एक रिमाइंडर है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया है, पॉजिटिव. ये सब बातें, ये सब स्पॉन्टेनिटी की तरफ इशारा कर रही हैं. दे ऑल कैन मेक अ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस. नाउ वी कम टू द इक्वेशन. Yeah, see, I am taking the different cases. पहला केस है जो बोलता है डेल्टा H नेगेटिव है एंड T डेल्टा S भी नेगेटिव है. दोनों को नेगेटिव लिया, ठीक है. अब ये जो मैंने दोनों को नेगेटिव लिया, ये क्या बता रहा है? एनर्जी कंडीशन, यानी कि एनर्जी कंडीशन यानी कि डेल्टा H वाला कंडीशन, वो प्रोसेस को फेवर करेगा क्योंकि नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है. लेकिन जो मैंने एंट्रोपी कंडीशन लिया है डेल्टा एस नेगेटिव, वो इसको अपोज कर रहा है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. ये मैंने इक्वेशन ले लिया. अब दिस इज नेगेटिव, यहां मैंने ये डाला इक्वेशन का, ये इक्वेशन का नेगेटिव डाला. एंड देन दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन. और ये मैंने टी डेल्टा एस डाल दिया जो कि नेगेटिव है. यहां हमने नेगेटिव लिया हुआ. अब देखो, अगर ये फाइनली नेगेटिव आ गया गिब्स एनर्जी, तब तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. तो हमें सिर्फ ये समझना है कब कब ये नेगेटिव आएगा, यानी व्हेन डेल्टा जी कैन कम नेगेटिव. ओके, अब देखो मैं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ध्यान देना. मान लेते हैं ये जो डेल्टा एच है, ये है ग्रेटर देन if delta h is greater than t delta s. ठीक है, मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, और ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही रहेगा. और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यानी ये वाला, ये देखो मैंने पॉइंट आउट कर दिया, ये पॉजिटिव आ जाएगा फाइनली. नाउ इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, तो यहाँ जो डेल्टा जी है ये नेगेटिव आएगा. इफ डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये जो यहाँ फाइनल है ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि भाई डेल्टा एच छोटा है, तो नेगेटिव में आंसर क्यों आएगा. एंड द थर्ड कंडीशन, व्हेन डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, तब डेल्टा जी 0 आ जाएगा. नाउ वी कैन गिव आवर कंक्लूजन. When delta G is negative, see here we have done delta G negative, then this process will be spontaneous. Delta G positive will be non-spontaneous. And this is at
equilibrium. Hope it is clear. Let us see case 2. In case 2, what I am doing, दोनों को positive ले लेते हैं. Let delta H be positive and let delta S into T, that is T delta S, let that also be positive. Now students, energy factor yani enthalpy opposes the process, but the entropy factor favors the process. Now I am writing the Gibbs energy equation. Delta G is delta H minus T delta S. Okay. Now I am substituting here. I have assumed this is positive. ये इक्वेशन का नेगेटिव है. ये इक्वेशन का नेगेटिव है. ये इधर मैंने I'm just changing the color. You will understand it better. और ये जो T delta S है पूरा ये भी positive है. Now what comes here as an answer will decide everything. Okay. Let us see. Suppose here I take delta H greater than T delta S. Then the final answer will be positive. If I take delta H less than T delta S, तो negative वाला number बड़ा है, final answer will be negative. And if I take delta H equal to T delta S, then my final answer will be 0. So I can conclude this is non-spontaneous, this is spontaneous, and this is coming at equilibrium. Now we move to case 3. किसी भी एक को नेगेटिव ले लेते हैं. चलो, लेट अस टेक डेल्टा एच. डेल्टा एच को हम बच्चों चलो ठीक है, जो आप बोलते हो वो नेगेटिव ले लेते हैं. एंड डेल्टा एस इंटू टी यानी कि टी डेल्टा एस को हम पॉजिटिव ले लेते हैं. नाउ लेट अस राइट व्हाट वी कंक्लूड. एच यानी एनर्जी कंडीशन इज फेवरिंग द प्रोसेस, तो यहाँ लिख देते हैं फेवर्स. और जो एंट्रोपी कंडीशन है, oh, positive, that also favors the process. अब यहाँ हम सॉल्व क्या करें, ये तो दोनों फेवर कर रहे हैं, मतलब फाइनल आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा. इफ यू वांट आई जस्ट राइट, चलो लिख देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, ये हमेशा स्पॉन्टेनियस हो. बट लेट अस सी, आप मेरे साथ बनाने की कोशिश करना लिखने की. तो देखो आ रहा है आपको, ये टी डेल्टा एस, ठीक है. अब ये नेगेटिव है, ये इक्वेशन का नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है. आई एम जस्ट राइटिंग हियर. See, I'll just, this I am putting minus. ये इक्वेशन का नेगेटिव है, नॉट डेल्टा एच टी डेल्टा एस का वैल्यू नहीं है वो. नाउ इसको देखने की भी जरूरत नहीं है. देखिए मैंने आंखें बंद रखी हैं, ये बंद रखी हैं, देखने की भी जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? सी, चलो देख लेते हैं, देख के समझते हैं. अब ये मान लेते हैं ज्यादा है टी डेल्टा एस, या मान लेते हैं ये टी डेल्टा एस से कम है, या मान लेते हैं ये इक्वल है. तो भी माय डियर दोनों नेगेटिव हैं. नेगेटिव नेगेटिव हमेशा ऐड होगा और फाइनल आंसर नेगेटिव ही रहेगा. मैथ्स आता है ना. मीनिंग ये तो हमेशा स्पॉन्टेनियस ही होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. Okay, let us see the last condition. Okay, delta H positive and T delta S negative, meaning the energy condition opposes the process. Oh my God, and entropy also opposes. इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं. This will always be non-spontaneous. Anyway, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो वो एकदम रफ्तार में काम कर डालेंगे, इसलिए कर देते हैं एक्सप्लेन थोड़ा. इसको भी पूरा ही कर देते हैं, ये इक्वेशन का नेगेटिव. नाउ देखो,
डेल्टा एच पॉजिटिव है, देख रहे हो ना, ये मैं यहां से लेती हूँ ये डेटा, यहां से, हाँ, और टी डेल्टा एस नेगेटिव है। क्लियर? नाउ नहीं, ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा, आएगा क्या? व्हाट डू यू से? नहीं, इसमें है कुछ मस्त, कुछ है, देखो, सी, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं आएगा। डेल्टा एच, ठीक है, यहां ये एनर्जी इसका, ये इसका, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड टी डेल्टा एस इज नेगेटिव, ठीक है, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं आएगा। नहीं, यस, वेरी गुड तेजल, आपने कहा, ये देखो, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा ना, तो अब कंपेयर करते हैं डेल्टा एच टी डेल्टा एस। अब चाहे ये ग्रेटर हो, चाहे ये लेस हो, या माय डियर स्टूडेंट्स ये इक्वल हो, पर ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होगा ना, और फाइनल आंसर यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। Yani, in any situation, we conclude the process will be non-spontaneous, 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 always non-spontaneous. So, that is the criteria for spontaneity of a thermodynamic process or any other chemical reaction according to Gibbs-Helmholtz equation. Now in this video, students, I am discussing till here. Now with this, I'm completing the discussion on change in Gibbs energy, the change in entropy, the change in enthalpy, and the exothermic endothermic reaction, how even an endothermic reaction can be spontaneous and how even an exothermic can be non-spontaneous. We have done in this video. Keep studying, keep watching, keep liking the channel, and forward the videos to your friends. Bye-bye. Love and blessings to all of you. Take good care of yourselves. Thank you, students.